अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। ఇంకా सी फिश बारबेक्यू प्रोसेस दिखाने के लिए हम लोग खासकर 50 किलो वाला बहुत बड़ा साइज़ वाला सी फिश खासकर आर्डर दे के मंगाए थे। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया और बढ़िया साइज़ भी है। उसको हम लोग क्लीनिंग करने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी और सक्सेसफुली उसका स्किन रिमूव करे थे और उसका जो भी वेस्टेज है उसके पेट में सब साफ़ करके और थोड़ा मैरिनेशन के वक्त आसान होने के लिए और अच्छी तरह बॉईल होने के लिए उसको छुरी से थोड़े गार्ड भी बिठाए थे। परफेक्टली वॉश करके बाजू रखे हैं। जो मैरिनेशन के पेस्ट की ज़रूरत है उसके प्रोसेस के लिए पहले हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी में हम लोग हल्दी मिर्ची नमक ऐड करेंगे। क्वांटिटी के लिहाज से एक्चुअली थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट और भी लगता है, इसलिए अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड करेंगे। इसी में हम लोग तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा ढेर सारा, क्वांटिटी ज़्यादा रहने से ज़्यादा ऐड करें और इसमें धनिया पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और गरम मसाला, इन सभी को इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए इलायची पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करे बाद इसी में हम लोग तेल ऐड करेंगे।
कुकिंग ऑयल, सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करे बाद एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी को हम लोग जो फिश पे, पूरे फिश पे हम लोग अप्लाई करेंगे और 1 आवर के लिए मैरिनेशन रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। अल्लाह अकबर। फुल फिश बारबेक्यू माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार भी है। इसी को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और रुमाली रोटी के साथ बच्चों को पेट भर खिलाएं।
टीम को कांटेक्ट करने के लिए contact@nawabskitchen.org पे मेल करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करिए। अल्लाह हाफ़िज़।